So in this video, we're going to do trade breakdown on EURUSD and GBPUSD, and this is going to be a market maker sell model. Okay. And if you guys remember this DXY, okay, last week जो हम लोग weekly plan किए थे, okay, I shared this weekly plan basically, okay. इसमें मैंने डिस्कस किया था कि DXY में I am bullish, okay. The reason I was bullish on DXY, we have this bullish fair value gap, right, form, and you can see we have this buy side liquidity resting equal high. सो मैं DXY में वेट कर रहा था मार्केट ही फेयर वैल्यू गैप टैप करे, ओके, न्यू वीक जब ओपन हो तो फेयर वैल्यू गैप टैप करे एंड देन ये लेवल होल्ड करे एंड कंटिन्यू करे प्राइस पुश करना हायर. सो अगर हम लोग DXY में बुलिश हैं, सो वी कैन लुक फॉर सेल ऑन EURUSD एंड GBPUSD, राइट. And you can see how DXY beautifully played out the week. So let's first डिस्कस EURUSD, ओके, एंड ये मार्केट मेकर सेल मॉडल होने वाला है एंड डेली इंटरनल टू एक्सटर्नल इज आवर फ्रेमवर्क. So here you can see on EURUSD also we created this daily bearish fair value gap and we have this equal low external liquidity resting. जैसे DXY में हम लोग का bullish fair value gap था, वैसे ही EURUSD में bearish fair value gap है हम लोग का, ठीक है. सो मैं वेट कर रहा था कि मार्केट ओपन हो, ट्रेड करे हायर, फिल दिस फेयर वैल्यू गैप, ये लेवल फिल करे, होल्ड करे एंड थोड़ा रिजेक्शन दे, देन वी कैन लुक फॉर सेल एंड वी कैन टारगेट दिस एक्सटर्नल लिक्विडिटी. नाउ काफी लोग का यहाँ पे क्वेश्चन भी आता होगा कि व्हाट इफ लेट्स न्यू वीक ओपन हुआ मंडे ट्यूसडे, मार्केट ट्रेड कर गया पहले लोअर और ये एक्सटर्नल ग्रैब कर गया. सो अगर लेट्स से पहले मार्केट ओपन हुआ और मार्केट फेयर वैल्यू गैप फिल नहीं किया, डायरेक्टली स्टार्ट किया ट्रेड करना लोअर, देन वी कैन लुक फॉर मार्केट टू एक्सटर्नल टू इंटरनल, और वी हैव टू वेट फॉर द मोर कंफर्मेशन कि मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड पुश करना चाहता है या फिर एक्सटर्नल से इंटरनल ट्रेड करना चाहता है. एंड लेट्स से मार्केट अगर ओपन होता है एंड पहले ट्रेड करता है टुवर्ड्स आवर फेयर वैल्यू गैप, देन वी कैन लुक फॉर द सेल क्योंकि हम लोग का लिक्विडिटी अनटैप रहेगा, राइट. सो ऑन 24th हियर मार्केट ओपन मंडे, मार्केट ट्रेडेड हायर, टैप दिस डेली फेयर वैल्यू गैप जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप था हम लोग का, राइट. We created this SMT with GBPUSD and DXY. If you go to GBPUSD, you will see कि DXY, sorry, if you go to GBPUSD, you will see on GBPUSD we have traded above this high, whereas EURUSD failed to trade above this high. So we have created this SMT, right? So what you can see here right now, okay, can you spot something more? Okay, जो भी आप सीखे हो अभी तक, can you spot something here? So you can see we have, first of all, we have this original consolidation as a market maker sell model, right? And here you can see we have grabbed this high, right? We have grabbed this high and you can see how strongly we displaced lower after taking out this high, right? So which entry model is this? This is basically silver bullet entry model, and in this video I have discussed everything about this entry model, okay? You can see we have this market structure shift, we have read this high, market structure shift with displacement with fair value gap. So your first entry will be at this fair value gap, okay. And ये जो entry था, this was inside London kill zone on Tuesday. You can see how beautifully market played out, tap our fair value gap and trade lower. If you have entered here, stop loss above this high, it was easily 1:2 risk reward, okay. नाउ यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ. सो देखो, पहला बात, जो डेली फेयर वैल्यू गैप से जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी का जो रेंज है वो काफ़ी इनफ है, राइट. मतलब एक अच्छा डिस्टेंस है. ऑफ कोर्स यू हैव टू कैच द पीस, ओके. आपको वो एक बड़ा रेंज में एक छोटा रेंज कैच करके प्रॉफिट सिक्योर करना चाहिए, डेफिनेटली आई एग्री. बट इफ यू नो कि वी हैव DXY confirmation कि DXY is bullish, EURUSD higher time frame is bearish, and let's say market भी यहाँ पे है, and you can see जो external range liquidity जो equal low है वो अभी तक untap है, okay. अभी तक वो liquidity grab नहीं हुआ है, right. And on 1 hour you can see we already displacing lower, so why not to take advantage of the move, okay. Learn to capitalize your move basically, ठीक है. So you can see we have created more fair value gap here, 1 hour fair value gap. So let's say if you have risked 1% here, maybe you secured
2 hour here, or maybe you like to target full external range liquidity, okay, depend on your personality. So let's say if you have entered here, you secured profit here, okay, we have created another fair value gap. You know कि we have liquidity untapped and we have created one more fair value gap. So why not to look for entry at this fair value gap and capitalize the move? Okay, you can see we created fair value gap here. You can see how market traded towards fair value gap. Let's say you have placed your limit, your stop will go above the high, okay, and let's say you targeting external or 2 hour. You can see market tap थोड़ा वहाँ पे overnight Asian session market consolidate किया, and then you can see how strongly it again started displacing lower. Again, we created one fair value gap on 1 hour. So why not to capitalize the move? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे भी एंट्री करते, लेट से ऐड करते पोजीशन एट दिस फेयर वैल्यू गैप, सो स्टिल आवर एक्सटर्नल वाज अनटैप, अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करते तो वी कैन डेफिनेटली कैपिटलाइज द मूव, ओके. सो दिस इज द important lesson. If you want to make your profit big, don't start risking directly 2-3%. Understand the higher time frame फ्लो, ओके, एंड फिर जो 1 आवर 4 आवर या जो भी आपका एंट्री मॉडल है, जो भी आप टाइम फ्रेम में एंट्री लेते हो, उस टाइम फ्रेम में कैपिटलाइज करने का कोशिश करो, ओके. लेट्स इफ यू हैव रिस्क 1%, लेट्स यू हैव सिक्योर 2%, लेट्स यू हैव रिस्क 0.5% हियर, 0.25% अनदर पोजिशन हियर. सो लर्न टू कैपिटलाइज द मूव. अगर रेंज काफी इनफ है, यू नो DXY conformation, you know we have this equal low on EURUSD, so learn to capitalize the move, okay. And you can see how market traded beautifully from daily bearish value gap to this external range liquidity. So now let's quickly break down GBPUSD. Okay, same thing. So DXY में हम लोग bullish थे, right? So you can see we have this daily bearish value gap as an internal range liquidity. Okay, and we have this external for the target. Okay, so from bearish value gap to this external, right? On 1 hour time frame, you can see we have this original consolidation, right? And we have this SMT. Okay, let's come back here. So we have this SMT. So remember EURUSD में market ये high grab नहीं किया था, right? So if you see GBPUSD में अभी तक हम लोग कहीं पे भी 1 hour bearish fair gap फॉर्म नहीं किए, कुछ strong displacement नहीं किए, right? You can see we have read this equal high here and then displaced lower, but no fair value gap. So I personally prefer fair value gap as an entry, okay. You can see later on next day we have grabbed this high, okay, this swing high we grabbed, and then we displaced lower with fair value gap. And again ये कौन सा एंट्री मॉडल है, लिक्विडिटी रेट एंड डिस्प्लेसमेंट, जो सिल्वर बुलेट जो स्टार्टिंग में हम लोग यूरो में देखे, राइट. Now here you can see we have two fair value gap, right? Two bearish fair value gap on GBPUSD. Now some of you might be thinking कि कौन से fair value gap में मैं एंट्री लूँ, ये लोअर वाले या ऊपर वाले. See अगेन यहाँ पे वो कंसेप्ट सेम काम आता है कि दिस रेंज इज इनफ, ओके. रेंज काफी बड़ा फ्रॉम दिस फेयर वैल्यू गैप, डेली बेस फेयर वैल्यू गैप से डेली एक्सटर्नल रेंज, अच्छा एक रूम है, राइट, मार्केट में. सो अगर मैं ये नीचे वाले फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री लेता हूँ, लेट से मैं अपना फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री लेता हूँ, मैं अपना स्टॉप लॉस लेट से ये हाई के ऊपर रखता हूँ, एंड अगर मेरे को 2 आवर या जो भी रिस्क रिवॉर्ड में ट्रेड करता हूँ, अगर मेरे को वो मिल रहा है, तो आई एम कंफर्टेबल टेकिंग ट्रेड एट दिस लोअर फेयर वैल्यू गैप, ओके. द रीजन आई एम गोइंग टू पुट माई स्टॉप लॉस अबव द हाई, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट ये फेयर वैल्यू गैप भी फिल करे, एंड मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ये फेयर वैल्यू गैप में एंट्री लूँ और मैं स्टॉप लॉस एकदम टाइट रखूँ यहाँ पे, ओके, कि मार्केट में भी ये फेयर वैल्यू गैप भी फिल करे, ओके, बिकॉज वी डोंट नो कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप फिल करेगा. माई गोल इज टू कैपिटलाइज द मूव जो मार्केट में रेंज है, राइट. आई डोंट वांट अ वेरी परफेक्ट एंट्री, ओके. आई नो कि ये रेंज फ्रॉम फेयर वैल्यू गैप टू एक्सटर्नल इट्स गुड range, so I have to make I have to capitalize the move basically, okay. So I'll place my limit at this bearish fair value gap lower वाला, एंड अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखूंगा ताकि मार्केट को रूम मैं दूं कि हो सकता है कि मार्केट ये फेयर वैल्यू गैप टैप करे एंड देन मे बी ट्रेड करे लोअर, सो स्टिल आई विल बी in safe position, right? And you can see how market tap this bearish fair value gap, trade lower, created again one bearish fair value gap for the adding your position basically, okay.
So capitalize the move, and you can see how market beautifully played out towards this external range liquidity. Okay, so internal to external, simple concept. You just have to understand the higher time frame flow, and then you can enter on the lower time frame basically. Okay, and if you guys want to see my execution, I'd say my execution on my Discord channel, and this is free. Okay, you guys can go and join my Discord, Skill Indian Trader. Okay, here I share my market analysis, weekly commentary. I do trade breakdown. We discuss. If you guys have any question, I answer that also. So this is free community for you guys. So make sure go and join. Link आपको नीचे मिल जाएगा. Okay. Thank you for watching this video. See you guys on the next video.